है हम लोग यूज कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ स्टेट्स क्या रहेंगी? 8. So that is 2 raised to 3 is equal to 8. At that time we are saying that it is a mod 8 counter or modulus 8 counter, isn't it? Means there are 8 states. This number indicates number of states, not the number of flip-flops. Is it clear? Yes, ma'am. Okay. Now see, in short I will tell you because you will confuse what is it. See, this is a 7490 AC. It is having the clock, VCC, ground as usual. There are two clocks, clock A, clock B, and it consists of the mod 5 as well as the mod 2 counter. Okay. कब तक बच्चे ज्वाइन होते हैं? So mod 5 counter means how many states will be there? 5 states. And for mod 2 counter? 2 states. 2 states. See, 2 states means how many flip-flops you will require? 1 flip. 1. So there is one output, that is a QA. For mod 5, how many states are there? 5. 22 states. 5 states are there. But then how many flip-flop do you require? 3. 3. That's why QB, QC, QD ये वहाँ पे IC में रहता है. So these are the QB, QC, QD. These are the outputs and these are the reset pins and this is the set pin. That is R0, R1, S0, S1. Okay. We will see the truth table later on. Just I have told you that I will explain you in the time of practical. But now what is your question? The design mod 6 counter using IC7490. आप लोगों को मतलब ENTC and as well as the computer students, you are having the mod 6 counter or mod 8 counter or any mod using the 7490 IC. Okay. So see, there are clock count states that 0 to 9. You are having the QD, QC, QB, QA inbuilt in a IC and there is a reset input. Now what is our requirement? How many states should be there? 6. 6. So if you observe this, see this much part, 6 states means this counter is going to count from 0 to 5. Isn't it? We are including 0. That's why 6 is not going to be included here. So it will count from 0 to 5. Shit. So if you see this, we require this much part only. We doesn't require the counting after this because it will not happen again because we are using this. We have to design the mod 6 counter using IC7490. So we are interested in these states only from 0 to 5. So at that time reset input should be low. Okay, because we require the status. And see here, this is a 000, 0001, 0010, 0011 means 3, 0100, 4, 0101. So this is a 5 and this is represented up to the 9. For 6, 7, 8, 9, now what to do? We doesn't require this. So again, we are using the reset input and that should be high because we doesn't require for this output. Got it? जो हमें चाहिए इसके लिए हम लोग reset input 0 कर रहे हैं और जो नहीं चाहिए उसके लिए क्या कर रहे हैं? Reset input 1 कर रहे हैं. Now you have to draw the K-map for the reset input. Okay. So observe the reset input and prepare the equation accordingly. C, QB, QA, QD, QC. Reset input in condition के लिए क्या क्या है वो लिखना है. यहाँ से यहाँ तक 0, 0, 0 है और यहाँ से यहाँ तक 1, 1, 1, 1 है. तो you just write down and otherwise put it as a don't care. क्योंकि 9 के आगे 10, 11, 12 up to 1, 1, 1, 1 means 15 तक आएगा. So just cross it and don't write down don't care. Now you just try it whether you are getting the same equation. अभी आप लोग प्रिपेयर करने में K-map मत टाइम वेस्ट करो. Just write down all these things whatever are there in a K-map as it is. Write down this bit also as a
take on left side QD, QC, and on right side write down QB, QA. Okay. And tell me whether you are getting the same equation. If yes, you have to tell me how many quads are there, how many pairs are there. Got my question? Or is there any octet is going to be formed? Is it clear? Yes, sir. Just try it. Take some time. Very few points are remaining. Just step diagram is very easy. It will take only 10 minutes. But for the practical purpose, you need this. सब लोगों ने K-map निकाला क्या? Yes, ma'am. निकालो. जैसे इक्वेशन अभी यहाँ पे मत दिमाग लगाओ कि ये ट्रूथ टेबल क्या है. जो है वो सही है. सिर्फ यहाँ पे लिखो 0 0 0 जो भी है 1. डोंट केयर. राइट इट एज इट इज एंड जस्ट ट्राई फॉर द इक्वेशन. आई हैव टू चेक वेदर you are comfortable with K-map or not. Are you able to form the equations from the K-map? Yes, ma'am. Same ही आ रहा है. सेम आ रहा है. तो मुझे बताओ कितने क्वाड है यहाँ पे, कितने पेयर है. इज देयर एनी ऑक्टेट आल्सो? Yes, ma'am. एक ऑक्टेट बन रहा है और एक क्वाड बन रहा है. सभी को मिल रहा है क्या? Yes. ऑक्टेट कहाँ पे बन रहा है बोलो शुभम. मैम लोअर का जो 2 रो है ना वो सारा मिला. दैट इज डोंट केयर 6 है और 1 1. वी आर इंक्लूडिंग दिस डोंट केयर अलोंग विथ 1 1. So this octet is going to be formed. And for this octet, any other. आप मत बोलो शुभम. यहाँ पे वो बोल रहा है कि octet हो रहा है. तो just any student tell me what will be the equation for this. If this is our octet, oh no. If this is our octet, what will be the equation for this? For that octet only. QD. QD. Very good. Why QD? Because if you see at the upper half QB QA, if you consider the QB QA, it is going to change, isn't it? At all points. But if you consider QC QD, you have to consider this 1 1 and 1 0. So 1 0 is going to change and 1 1 will be remain as it is. So this is nothing but the QD. That's why the equation is a QD. Those who are not able to remember the K-map and how to form the equations, for those we are revising the things. Okay? Is it clear to all? Yes, ma'am. निकालो वहां पे आप लोग जिसको समझ में नहीं आया है. अभी बोला क्या हम लोगों ने, ये नीचे का है लोअर पार्ट, दैट इज फॉर्मिंग अ ऑक्टेट एंड वी हैव आल्सो explain about how to write the equation. Okay, now we'll go ahead. What about other? मैम एक और क्वाड बन रहा है. Which one? मैम ये जो 1 1 है. This and this, isn't it? This second Yes. row, third and fourth column, isn't it? Yes, ma'am. वो और डोंट Second- केयर लेके. Yes, second row, third and fourth column, and also I think third and fourth row and first and second column, isn't it? यहाँ पे मुझे ड्रॉ करने के लिए आता ना. मैम वो तो ऑक्टेट में इंक्लूड हो गया ना, तो फिर एक और क्वाड बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना. पूरे का पूरा. यस मैम वो पूरा ऑक्टेट में ही इंक्लूड हो गया ना, तो फिर क्वाड बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. Yes, right. You are right. Then what is the equation for this? QC QB. Isn't it? Yes.
ये क्यों इंक्लूड नहीं कर रहे ये भी समझ में आया? एक बार अगर इंक्लूड हो गया है तो जरूरत नहीं कि फिर से इंक्लूड करना चाहिए, ये अभी तक इंक्लूड नहीं हुआ था इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे इंक्लूड किया, ठीक है। सो वी आर फॉर्मिंग, हाउ वी आर गोइंग टू फॉर्म, सी our first aim is that you should approach for the octet, then for the quad, and then for the pair. Now whenever there is a don't care condition, you can take it as a 1 if there is, if the pair is going to form or quad is going to form or octet is going to form. Now it is easy to form the quad here, that's why we are considering this 1 and this we are including these two don't care conditions. Okay, so this is nothing but the reset is equal to QD plus QC into QB. So इसके हिसाब से हम लोगों ने क्या किया, ये तो पिन इनबिल्ट है, so just only you have to give the internal external connections. So what you have to do, how many gates are required by observing this equation? 2 गेट, 2 गेट, कौन से? QC QB के लिए क्या लगेगा? एंड चाहिए और फाइनली और चाहिए ऐड करने के लिए। Yes, and is a multiplication. So for that purpose, for QC QD to multiply, we need a AND gate. See there, this QC we are connecting here to one input of AND gate, and QD is another input to AND gate, and QB you have to add output of this plus QB you have to add. Again, this is we are connecting to the reset pins because this equation we have got for the reset purpose. Okay, and for here we are connecting set pin to the ground. All this I will explain you again later on. Just I want to tell you how to form the equations and all. Okay, what is this? Divide by 20 counters using 7. Okay, let it be. What do you mean by mod 20 counter? 20 means 20 स्टेट, there are 20 states, yes. And we have seen that there is, if you are using the 17490, this is called as a decade binary counter. Decade means how many states are there? 10, Mod 10. So that it is called as a mod 10 also. Now you have to design the mod 20 counter. How many ICs are required in 7490? 2 चाहिए। 2 चाहिए, इसलिए यहाँ पे 2 लिए हैं, इतना नहीं है आप लोगों को। बीसीडी काउंटर सिंक्रोनस, बीसीडी हमें नंबर पता है, कितना रहता है बीसीडी में? 0 to 9, only 0 to 9. So you have to write down the truth table again. For this circuit will reset, else it will count. Okay, so Q3, Q2, Q2, Q1, Q0, these are the inputs. So 0, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 up to the 9. How we will write in a truth table? Y. For Y to be 1, Y की वैल्यू 1 कब लिखेंगे? सिलेक्ट नहीं हो रहा है। 0 to 9 तक में y की वैल्यू 0 to 9 तक, इसलिए हम लोगों ने देखो 1, 0, 0, 1. So this is our 9. Up to this we have written y is equal to 1, and after that we have written the y is equal to 0. So we don't need output value after this. This is the one synchron design BCD counter using a JK flip-flop. Okay. Now I think all of you are comfortable to write down all these things. Again, you have to prepare the equation. Just previously we have seen the synchronous counter, this one, यूजिंग जेके फ्लिप फ्लॉप। सिर्फ क्या चलो हो रहा है कि स्टेट्स अलग अलग है, यहाँ पे हम लोगों को 0 to 4 तक काउंट करना था, तो इसके हिसाब से हम लोगों ने ट्रूथ टेबल लिखा, पहले फ्लिप फ्लॉप चूज किए, बाकी सब किया। ऐसे ही यहाँ पे भी करना है, तो यू विल गेट दैट इक्वेशंस एंड यू विल गेट दिस स्ट्रक्चर after you form the equations from the K map. Okay,
अभी ये नहीं कि यहाँ पे ये एंड कैसे आया, ये एंड कैसे आया, ये सब करने के बाद ही यू विल गेट दिस डायग्राम. Now this is the important point. Important means we have already discussed all these things, but theoretically see flip-flop and sequential circuits changes their state in accordance with the clock signal. हम लोगों ने देखा कि जब clock signal apply करते हैं तभी वो क्या होता है, state change करता है. So there are two states we have seen it, that is the present state and next state, isn't it? So what do you mean by the present state? The status of all state variables at some time t before the next clock edge represents condition. So that is called as a present state. In short, what you can say, present state is nothing but the state before applying the clock pulse. Got it? Present state means state before applying the clock pulse. And what about the next state? It is a status of all variables at some time t plus 1, which represents the next state. Means this is the state after applying the clock pulse. These are the only theoretical points. Got it? What is the present state and what is next state? Yes, ma'am. अगर एमसीक्यूज रहेंगे तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को ऑप्शंस अगर कंफ्यूजन हो सकता है इन चीजों में. So keep it in mind. Present state is nothing but the state before applying the clock pulse, and next state is the state after applying the clock pulse. There are two concepts regarding the Murray machine and Millet machine. Just I have told you, I am not going to explain in detail because it is a theoretical point. And just keep in mind that simply any Murray machine, मतलब हम लोगों ने अभी तक जो explain किया है, इनमें से Murray machine मतलब क्या है? Output of the circuit depends only on the present state of the flip-flop. Then it is a Murray machine. हम लोगों ने sequential का design देखा है. Okay, we are using some combinational logic. And there is a connection from output to the input, or this from this state to the input also. So Murray machine is nothing but it depends only on the present state of flip-flop. Output of the circuit depends only on the present state of the flip-flop. And what about Millet machine? That the circuit output depends on the present state as well as on the previous inputs. Is called as a Millet machine. Just keep in mind these 2 points regarding the Murray machine and Millet machine. You should be able to draw the diagram. That's it. Now, state diagram. It is a short in this unit, and later on you are having the ASM charts and all in the further next unit. I think ASM chart. State machines. There is a separate unit for the ENTC students, and you are having what is algorithmic state machines and programmable devices. See, for ENTC students and computer students, ENTC students, just keep in mind that our sixth unit is regarding to the ROM, PLD, PLA, and all these points are going to be covered for computer students in the 4th unit only. Okay, 1 unit. You are having one different unit from ENTC students. We'll see it. State diagram. Basically, what do you mean by state diagram? See, it is a pictorial representation of a behavior of a sequential circuit. Pictorial, or you can say a graphical representation. All these are theoretical. You can read and only you can understood on your own. State is represented by the circle. Now what is here? See, this is the state diagram. Are you able to see this diagram? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. See, these are the states A, B, C, and D. Okay, these are including into the circle. This here we are written 0/0, 1/0, 0/0, and 0/0. Okay.
See, basically what we are saying that it is a graphical representation of the sequential circuit. This is called as a state diagram. State is represented by a circle. So whatever we have indicated in a circle, that is A, B, C, D, these are our states. And transition indicated by directed lines connecting the circle. ये जो arrow है यहाँ पे A to C या B to A है, D to B है या C to D है. These we are showing the transitions and it is indicated by this directed lines, means there is an arrow, that's why it is called as a directed lines connecting the circles. And this is nothing but the self loop. ये एक में जो ऊपर ऐसे arrow करके दिखाया है या C में दिखाया है या B में दिखाया है या D में दिखाया है, self loop indicates that next state is the same as a present state. तो वो वहीं पे रहेगा. Next state is the same as a present state. Okay. And this directed line we are separating by the input and output by a slash. Means suppose A to C. We have written 1/0. So 1 is your input and 0 is your output. Got it? Left का है वो input है, right का है वो output है. You have to keep in mind these points because you can't write in a different way. Got it? Yes, ma'am. डायरेक्टर लाइन पे इनपुट स्लैश आउटपुट ही लिखना है. मन में आया तो किसी को लगा कि मैं पहले आउटपुट लिखूंगा और बाद में इनपुट लिखूंगा. It is going to be wrong. Okay, these are some rules and regulations that you have to follow. Just a minute. Hello. Hello. हाँ बोला. Okay, we'll go ahead. Now there is a state table. One more point, that is a state table. So after forming a state diagram, from a state diagram you have to write down, you should able to write down the state table. अभी कौन इन हो गया? फास्ट हो रहा है? नहीं ना? No, no. नहीं तो आप लोगों को लगेगा मैम को ये खत्म ही करना है. मैं अभी बोर हो गई इस यूनिट से. Okay, state diagram translated into the tabular format are called as a state table. ये बहुत easy point है और छोटा सा ही point है, state diagram, state table and all. So see, this is regarding the Mealy machine and this is the Murray machine. Suppose, okay, and you have to write down the state table. What to do? Actually, what it indicates, it represents relationship between the input, output, and flip-flop states. Okay. Now see, present state, next state, and output. These are the columns. So AB, AB, AB. This is the output. We are indicating as a Y and Y. X is equal to next state input. Okay. What you have to consider two conditions. When X is equal to 0, when X is equal to 1. Output also when X is equal to 0, X equal to 1. Okay. Now, if the present state is A, when X is a 0, it is going to be in a A only. When X is equal to 1, it is going to be in a C. Okay. If you see the diagram, isn't it? जब 0 है तब वहीं पे रह रही है वो, और जब 1 है then only transition is going to take place, that is from A to C. Is it clear?
तो यहाँ पे जो है आप लोग ऐसे निकालो तो आप लोगों को समझ में आएगा, वो पैरेलल रहने चाहिए विंडोज। यहाँ पे अगर डायग्राम रहती तो इजीली यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। आप लोग बुक पे वैसे निकालो और यहाँ पे लिखो, तो ए और सी एट दैट टाइम वाई इज व्हाट, इट इज अ 0। ओके, आउटपुट क्या है 0, क्योंकि 1/0 वहां पे था। सिमिलरली फॉर बी, सिमिलरली फॉर सी एंड सिमिलरली फॉर डी। इन नेक्स्ट प्रैक्टिकल और स्टेट डायग्राम बहुत जगह आने वाले हैं, इसलिए आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट फॉर दिस। We'll see the directly examples regarding this, because you have to write down the state diagram. You are having the sequence generator and sequence detector also. At that time, you have to form the state diagram, state table, and all the things. Okay. So we are going to start directly for the numericals. Now, what is the design procedure? C. Obtain the state table from the circuit information such as the state diagram, timing diagram. ये जो कुछ दिया है उससे क्या फॉर्म करना है, स्टेट टेबल। स्टेट डायग्राम अगर दी है तो स्टेट टेबल फॉर्म करना है। ओके, देन रिडंडेंट स्टेट मे बी रिड्यूस बाय स्टेट रिडक्शन टेक्निक्स। वो हम लोग एग्जांपल लेंगे तो समझ में आएगा कि कैसे स्टेट रिड्यूस करते हैं। एंड बेटर वे आई एम हैविंग नोट्स रिगार्डिंग दिस थ्योरेटिकल हैंडरिटन नोट्स, दीज आर बेटर। Assign binary value to each state in a state table. You have to assign the binary value. Take a screenshot. Determine number of flip-flop required and assign the later. Choose type of flip-flop. कौन सा flip-flop लगने वाला है? From state table, derive circuit excitation and output table. Using simplification technique, derive the equations. एंड फाइनली ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम। ये तीनों तो हमें पता ही है, अभी किया है एक सॉल्व। स्टेट टेबल से क्या करना है, डिराइव सर्किट एक्साइटेशन एंड आउटपुट टेबल। आफ्टर दैट वी आर राइटिंग फॉर्मिंग द के मैप एंड सिंप्लीफाइंग द इक्वेशन, एंड फ्रॉम द इक्वेशन वी आर फाइंडिंग आउट द लॉजिक डायग्राम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज अ सीक्वेंस जनरेटर। A sequence circuit which generates a prescribed sequence of bits। मतलब कभी कभी क्या रहता है कि हमें 0 to 9 सभी के सभी नंबर नहीं चाहिए, सिर्फ स्पेसिफिक सीक्वेंस चाहिए। फूड इंडस्ट्रीज में ज्यादातर ये यूज होता है। A sequence circuit which generates a prescribed sequence of bits in synchronism with the clock is referred as a sequence generator. Okay. It is a sequence generator. We'll see directly one example, then you will understood in a better way. Design a sequence generator to go through the following states by using JK flip-flop. अभी ये देखो क्या है, 0 के बाद कौन सी स्टेट है, 1, फिर 3, फिर 4, 6 और फिर 0। 4 और 6। सो 0 to 6 चाहिए हमें, लेकिन बीच में 2 नहीं चाहिए, 5 नहीं चाहिए। ओके, हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप्स विल रिक्वायर्ड फॉर दिस? 3। Okay, we'll see. So you require 3 flip-flop. Okay, so we are forming this excitation table as already seen. We have seen in one example that I have explained you yesterday. So you have to write down the present state, next state, A, B, C, that is a J, K, JB, KB, JC, KC. यहाँ पे ऑलरेडी एक्साइटेशन टेबल जो नॉर्मल वाला है जेके का वो यहाँ पे दिया है। इसके हिसाब से हमें ये क्या करना है, ट्रूथ टेबल कंप्लीट करना है। अभी देखो पहले क्या करेंगे, हम लोगों ने 3 फ्लिप फ्लॉप लिए हैं, मतलब वहां पे स्टेट्स कितने रहेंगे, 0 to 8. So that means 0 to 7. Okay, so just write down in a present state as a 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0 up to the 7. Is it clear? Yes, ma'am. Yes. Now we have to write the next state table. See, कई बच्चों को ये प्रॉब्लम आ सकता है कि अगर ये दोनों चीजें बराबर है तभी ये सब कुछ बराबर होगा, क्योंकि ये तो हमें क्या करना है, प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट देख के अगर एक्साइटेशन टेबल मालूम है उसके हिसाब से हम लोग ये वैल्यूज लिख रहे हैं। गॉट इट? अगर नेक्स्ट स्टेट टेबल भी अगर गलत हो गया देन इट विल बी रॉन्ग। So
for present state there is no difficulty, just write down from 0 0 to 7. Okay, now see what is next state after 0. What do you want? 1. So we have written here 0 0 1. Okay, now 0 0 1 as a present state है. अभी हमारी present next में next clock pulse में क्या हो जाएगी? 0 0 1 will be present state. So what should be the next state? 3. 3. That's why we have written 0 1 1, not 0 1 0. यहाँ पे 2 लिखा है क्या हम लोगों ने? No मैम. नहीं. So 0 1 1. Now अगर present state 2 है तो next state में क्या चाहिए मुझे? नहीं चाहिए तो डोंट केयर डाल दो. 2 वहां पे नहीं है, so don't care. ओके, प्रेजेंट स्टेट अगर 2 है तो कुछ भी मत करो, ऐसे बोलना है हमें. So you have to write down don't care here. Next 3 is there. Okay, after 3 what to do? Next state. What is the next state? 4 is the next state. So just write down 1 0 0 next state. Now when the present state is a 4, that is a 1 0 0. What do you require? Next state should be 6. according to our diagram we need a 6. So 1 1 0. Write down next state 1 1 0. अगर 1 0 1 है present state में तो क्या करना है? Don't care. Don't care. So you don't have to consider because 4 5 is not there, means we don't require 5. So don't care, write down don't care here. Regarding the 6 now 1 1 0 0 is a present state, suppose. So from that diagram, state diagram, what is the requirement of the next state? 0. 0. So 1 1 0 is there for present state. Then write down 0 0 0 for the next state. And what about 1 1 1? 7 is there? Don't. No ma'am. Yes, we don't need 7. So don't consider. So or you can write in digital don't care. So we are writing here don't care. Is it okay? समझ में आया? Yes ma'am. यहाँ पे क्या चेंज होगा ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल में? सिर्फ यहाँ पे नंबर बदलेंगे. यहाँ पे 0 2 6 7 कुछ भी हो सकता है. अगर एक बार समझ में आया तो कुछ भी मतलब बहुत इजी है ये पार्ट. ओके, नाउ सी व्हाट you have to prepare the excitation table. And what I told you, what do you mean by excitation table? क्या रहता है excitation table में? आउटपुट पता रहता है, उससे इनपुट प्रेडिक्ट करता है. Yes, we know the output, that is the present state and next state, and we have to predict the input. हमें input क्या देना है उसके हिसाब से. जैसे आप लोग एग्जाम की तैयारी करते हो तो पहले क्वेश्चन पेपर देखते हो कि क्या टाइप के क्वेश्चन है, तो मुझे क्या प्रिपेयर करना है. प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट. सी हम लोगों को अभी जे के लिए देखना है, तो जस्ट सी जे और के का देखेंगे तो क्या ऑब्जर्व करेंगे? क्यू ए और क्यू ए प्लस 1. पहले तो क्या है क्यू ए 0 0 0 0. सी हियर इन एक्साइटेशन टेबल, अपर का एक्साइटेशन टेबल देखो ब्लैक में जो है. तो 0 0 के लिए जे और के की कंडीशन क्या चाहिए हमें? J0 K don't care. J0 K don't care. That's why we are written here J0 K don't care. Immediately write down because these two are same. Okay. Now see the third line. This is a 0 and this is a don't care. Okay. So do you need to give the input here? No मैम, उसमें डोंट केयर डाल देंगे. No. That's why see we have written throughout don't care condition. So similarly you can write whenever in next state don't care जहाँ पे है वो सभी यहाँ पे कंटिन्यू करो. So write down the don't care for this condition, for this condition, and this for 7 condition. Okay, so you can write down don't care there so that it is easy to complete. Now if you see the fourth line, it is a 0 and it is a 1. Okay, so 0 1 कहाँ पे हमारा ये है, तो यहाँ पे जे और के का क्या चाहिए?
State. J का 1 चाहिए, K का don't care. We have to give J as a 1 and K don't care. So we have written here J as a 1 and K as a don't care. Okay. Now again C, this is a 1 1 1 1 1 1 कहाँ पे है? यहाँ पे है last. So what is J and what is K? J don't care, K 0. Yes, this is a don't care and this is a 0. So write down as it is. Again there is a 1 0 1 1 और क्या है? 1 0 and 1 don't care. Okay. अभी 1 1 का तो don't care है, so this will there is no need to mark anything. Again consider for 1 0. So 1 0 क्या है? J क्या चाहिए 1 0 में? Don't care, K 1 0. Yes. So this is a don't care and this is a 1. All of you got this? Yes, ma'am. Can you complete this table Yes, ma'am. till next practical? Today only. Okay. Okay. Then again, see, we have already explained the numerical in a different way. Now this is regarding with the sequence generator, but concepts are not going to change at all. You have to form this excitation table, then you have to write down you have to draw the K map for this, then you have to write down the equations again for JA, JB, KA, KB, JC, KC, and from this you are able to draw this logic diagram. सीक्वेंस डिटेक्टर बाद में देखेंगे, वो थोड़ा सा उसमें भी सेम ही है. ओके नो, बहुत ज्यादा हो जाएगा, करेंगे कंप्लीट इस, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में. नेक्स्ट लेक्चर तक नहीं जाऊंगी मैं, मुझे नेक्स्ट यूनिट ही स्टार्ट करना है. आर यू कंफर्टेबल टू राइट डाउन दिस टेबल? Yes, All ma'am. of you? Yes, ma'am. Now just write down this or take a screenshot, complete it. We'll discuss or we'll continue in a practical also. I'm going to explain you about the 7490 IC also, and we have to finish at least this point. Okay? Should I stop it? Okay, ma'am. निकालो और करो. कल अगर किसी ने होमवर्क नहीं किया है तो दिस इज ऑल्सो द सेम पॉइंट. Got it? Yes, ma'am. आई होप आप लोग करोगे, क्योंकि सी डिजिटल में ऐसा नहीं है. अगर स्टेट डायग्राम, स्टेट ट्रांजिशन आप लोगों को कंप्यूटर के बच्चों को ज्यादातर पता रहेगा कि आप लोग खुद से पढ़ के भी कर सकते हो, लेकिन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे नहीं है. अगर आपको नेक्स्ट टेबल प्रिपेयर करने नहीं आ रहा है, अगर कंसेप्ट नहीं समझ रहे हैं, तो आगे का कुछ भी नहीं आप कर सकते. आर यू गेटिंग दिस? Yes, ma'am. समझ में आ रहा है. हाँ, क्योंकि कैसे, ठीक है, अगर किसी को समझ में भी नहीं आ रहा है तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि आज ही के लेक्चर प्रैक्टिकल में मुझे ये पॉइंट बोलो, क्योंकि बाद में ये इस टाइप का कुछ कहीं भी लास्ट 2 यूनिट्स में नहीं है. दिस इज नॉट गोइंग टू रिपीट इट अगेन. एएसएम चार्ट आप लोग खुद से भी कर सकते हो, क्योंकि दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ थेरोटिकल तो मैं फास्ट ले लूंगी. अगर यहाँ पे आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे अभी बोलो, क्योंकि बहुत इजी है. एक बार अगर समझ में आया ना, तो अगर फिजिकली आप लोगों की एग्जाम होने वाली है तो दैट क्वेश्चंस विल बी फॉर 7 to 8 मार्क्स, बिकॉज यू हैव टू डू मेनी थिंग्स देयर, क्योंकि बहुत टाइम लगता है. अगर आप लोग टेबल अच्छी तरह से बनाओगे तो ही के मैप सही आएगा, के मैप सही आएगा तभी इक्वेशन फॉर्म कर सकोगे, तब इक्वेशन करेक्ट आएंगे, और इक्वेशन करेक्ट आएंगे तभी लॉजिक डायग्राम करेक्ट आएगी. नहीं तो एक गलत हो गया तो सभी का सभी गलत. और ऐसे कंसेशन नहीं मिलती है कि बच्चे ने कुछ तो किया है इसीलिए हम लोग मार्क्स देंगे. ऐसे डिजिटल में होता नहीं है, बिकॉज इट इज आइदर 0 और 1, नॉट लाइक इन अ डेसिमल. गॉट इट? Yes, ma'am. Okay, I hope we'll meet it again at 1:45 till you complete this task. Code for today's lecture is a 22. Okay, आप लोग फॉर्म भरते हो ना? Yes, ma'am. अटेंडेंस फॉर्म भरो. Okay, because this attendance I will consider at the time of term work marks. You are having the term work for this practical. Should I end the meeting? Ma'am, can you repeat the code? 22 22. Okay, ma'am. मैम 1-2 बार फॉर्म भरना भूल जाता हूँ अटेंडेंस का.
तो मेरे लेक्चर के लिए एब्सेंट ही लग जाएगी ना, मुझे नीचे पूछेंगे। मैम ऐसे मतलब शाम तक भी दे सकते हैं, ऐसे कभी कभी होता है कि बाद में याद आता है 2-3 लेक्चर हो गए उसके बाद, हाँ तो हाँ हाँ, कोई ओके बात नहीं, लेकिन दिन में कंप्लीट करो जितने भी लेक्चर प्रैक्टिकल किए हो। ओके मैम, ओके, आई विल एंड द मीटिंग। थैंक यू मैम।